chapter number 7, packing. Okay, so what packing is about? So packing is a process which is very interesting for some people, and some people are very much irritated by the process कि हमको पैकिंग बिल्कुल नहीं पसंद है, और कुछ लोगों को पैकिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि पैक करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, बहुत सूदिंग लगती है कुछ लोगों को पैकिंग. सो पैकिंग इज इधर दिस वे और दैट वे, मिड का कुछ नहीं है कि थोड़ी बहुत ठीक है लगती है. कुछ लोगों को पैकिंग बहुत ज्यादा पसंद होती है, कुछ लोगों को पैकिंग करने में बहुत इरिटेशन लगता है कि सिर्फ काम निपटे ऐसा लगता है. ठीक है. सो दिस पैकिंग, दिस स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट अ three friends who are getting ready for a journey and who are packing for a journey. ठीक है, वो लोग तीन फ्रेंड्स की स्टोरी है, who are getting ready for a journey and they are also packing for a journey. And what confusion and what mess takes place while they are packing, and when they are not good at packing, what confusion and what mess takes up, that is the story about. Okay, three stories. एंड ऑल्सो जैसे कि हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स ऑफ ह्यूमर मिले थे हमको किस चैप्टर में, द स्नेक एंड द मिरर के अंदर. ओके, इट वाज सिंपली अ स्टोरी about a snake and a mirror, but there were so many incidents of humor in the story. Similarly, in this story also, there are so many humorous incidents which make the story humorous. Otherwise, it will be a plain blank story. But in this, so many incidents happen, and there are some incidents written over there which makes the story humorous. ठीक है, ऐसे बहुत सारे incidents लिखे गए हैं, किस तरीके से स्टोरी लिखी गई है, which makes it humorous, which makes it's funny. Okay, so let's begin with the chapter. And in this one, I said I'd pack. So the narrator is himself telling the story. वो अब first person में story बता रहा है, what happens and what does not happen when the whole thing is taking place. I said I'd pack. मैंने कहा मैं पैकिंग करूंगा. Okay, so the narrator is saying कि मैं पैकिंग करूंगा. I rather pride myself on my packing. मैं जो है pride myself मतलब अपनी, मुझे बहुत proud है अपनी पैकिंग के ऊपर. Now who says that? कि I said I'd rather pride myself on my packing. कि मेरी पैकिंग पे मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत प्राउड है. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. पैकिंग एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है किसी भी इंसान से ज्यादा, कोई भी जो जिंदा इंसान है, जिंदा चीज है, उससे ज्यादा मुझे पैकिंग के बारे में सबसे ज्यादा पता है. आई फील पैकिंग के बारे में मुझे सबसे ज्यादा पता है किसी भी इंसान से ज्यादा. इट सरप्राइजेस मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर. और कभी कभी मैं सोचता हूँ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे ही सबसे ज्यादा पता है, बाकी लोगों को इतना नहीं पता है. So are you getting the chapter itself? It starts in a with a humorous mode, with a funny mode. It starts. Okay, एक नॉर्मल ह्यूमरस नॉन लाइट वे में स्टोरी स्टार्ट हो रही है कि मुझे जो है अपनी पैकिंग के बहुत गर्व है. पैकिंग कोई ऐसी चीज है क्या जिस पे आप गर्व करते हो? गर्व आप अपनी नेशनैलिटी पे करते हो, आप आपकी करेज पे करते हो, उन पे गर्व करते हो, है ना. इस बंदे को पैकिंग, इस बंदे को गर्व किस पे है? इसकी पैकिंग पे गर्व है. ओके, सो ही इज सिंपली राइटिंग दिस इन अ लाइट वे में लिखा है कि मुझे अपनी पैकिंग पे बहुत गर्व है और मुझे इस दुनिया में पैकिंग के बारे में सबसे ज्यादा पता है. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. So मैंने उसके जो दो दोस्त हैं, जो नरेटर है उसके दो दोस्त हैं, कौन? जॉर्ज और हैरिस. जॉर्ज और हैरिस जो उसके दो दोस्त हैं, तो मैंने ये फैक्ट जो था अपने दो दोस्तों को बताया. किसको? जॉर्ज और हैरिस को बताया. कौन सा फैक्ट? कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा पैकिंग के बारे में मुझे ही पता है. ये फैक्ट अपना जो फैक्ट था वो जॉर्ज और हैरिस को बताया और उनको बोल दिया कि ये सब तुम जो पैकिंग है, यू जस्ट लीव इट अप टू मी, यू जस्ट लीव द होल पैकिंग अप टू मी, कि ये सारा जो मैटर है वो मेरे पे छोड़ दो तुम लोग. दे फेल इनटू द सजेशन विद द रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. ओके, सो नाउ दे आर वो उनको लगा ठीक है, ये पैकिंग के लिए अग्री कर रहा है, ये पैकिंग के लिए मान रहा है, तो लेट इट बी, मानने दो, हमको क्या फर्क पड़ रहा है. इट्स बेटर कि वो उनका काम निपट रहा है, कि उसको पैकिंग करनी है, करने दो, हमारा काम खत्म हो रहा है. उनको लगा ये ऐसा वियर्डली इतना क्यों बोल रहा है कि भाई मेरे को पैकिंग के बारे में सबसे ज्यादा पता है. द George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table.
So now they are relaxingly they are sitting. Who? George and Harris. As the narrator has said कि I will pack everything. मैं सब कुछ पैक कर दूंगा, तुम मस्त रहो. तो they were like okay, तुझे पैक करनी है तू पैक कर. तो जॉर्ज और हैरिस दे आर नाउ रिलैक्सिंग एंड दे डोंट वांट टू पैक. उनको वैसे भी पैकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है. सो अब वो चिल कर रहे हैं, वो अपना रिलैक्स कर रहे हैं. जॉर्ज और हैरिस दे आर सिटिंग ऑन द चेयर एंड दे आर सिंपली रिलैक्सिंग एंड दे हैव लेफ्ट द होल पैकिंग टू द नरेटर. उन्होंने नरेटर के ऊपर छोड़ दिया कि तुम पैकिंग करो. This was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about around my directions. अब उसको लगा ये तो दोनों बैठ गए, जॉर्ज और हैरिस तो मस्त अपना चेयर पे बैठे हैं, आराम से फैल के बैठे हैं. So this was hardly I was what I intended. अब नरेटर बोल रहा है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि ये चुपचाप आराम से बैठ जाएंगे. What I had meant, मेरा मतलब था कि मैं तुमको डायरेक्ट करता हूँ पैकिंग के अंदर. मैं बताता हूँ कि ऐसे ऐसे पैक करो, मैं बॉस बनूंगा और ये दोनों मेरा काम करेंगे पैकिंग के अंदर. मैं इनको बताऊंगा कि कैसे पैकिंग करनी है. आई वुड बॉस द जॉब मतलब मैं बॉस बनूंगा, मैं डायरेक्टर बनूंगा और ये दोनों मेरा हेल्प करेंगे. वो मेरा जो छोटा मोटा काम है, काम उठाने का, पैक करने का छोटा छोटा काम है, वो करेंगे. मैं उनको बताऊंगा पैक कैसे करना है. बट यहाँ क्या हुआ, उल्टा काम हो गया. George and Harris, they are just relaxing, and the whole matter of packing, it fell into the hands of narrator. अब वो सारी बात किसके ऊपर आ गई? नरेटर के ऊपर आ गई. उसको काम करना पड़ेगा क्योंकि उसने ने बोला कि तुम आराम से बैठो, मैं तो कर लूंगा. तो उससे उसका मतलब था कि मुझे तुम लोग थोड़ा हेल्प कर दोगे. But they are not helping him out. They are just simply sitting over there. Where are we? What I had meant, of course, what I should boss the job and that Harris and George should potter about around my directions. I pushing them aside every now and then with, "Oh, you, here, let me do it." There you are, simply enough, really teaching them. So I just wanted to teach them how to pack. The narrator wanted to teach George and Harris how to pack. That I will tell them, इसको यहाँ रखो, उसको वहाँ रखो, ऐसे मैं उनका बॉस बनूंगा, इनसे सारा सामान उठवाऊंगा. बट दे आर सिंपली रिलैक्सिंग. तो अब बात उसके ऊपर उल्टी पड़ गई. They are really teaching them, as you might say. They're taking it in the way that they did irritated me. अब जो उन्होंने जिस तरीके से इसको लिया है, इस मैटर को लिया है, now it is getting me irritated कि ये तो अब आराम से कुछ नहीं कर रहे. मैंने तो सोचा था ये सारा मेरा काम करेंगे and मैं बॉस बनूंगा, but now they are simply relaxing and this is irritating me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working. So सबसे ज्यादा दुनिया में मुझे क्या irritate करता है कि I am working and other people are just sitting around. So this is the most irritating thing for me, that other people are simply sitting doing nothing and I am working. Obviously किसी को भी गुस्सा आएगा कि मैं सारा काम कर रहा हूँ और दूसरा जो मेरे सामने वाला वो आराम से बैठा है. So that was making him irritated. I lived with the man once who used to make me mad that way. Because and why ऐसा उसको irritate क्यों करती है ये चीज? क्योंकि एक पहले वो ऐसे इंसान के साथ रह चुका है जो ऐसा करता था. Why? What kind of man? Who used to do nothing and while the narrator was working. So he has already lived with such person. एक बार वो already ऐसे person के साथ रह चुका है जो कुछ नहीं करता था, ऐसे ही बैठा रहता था, and he used to do all the work. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. And what would that other person do? He would just simply relax on the sofa and he would watch him doing the work. और वो देखता था कि ये सारा काम कर रहा है and he used to just sit around. He said he said it did him real good to look at me messing about, and he used to just sit around there. And what he used to say that he likes watching me work. कि उसको अच्छा लगता था कि वो आराम से बैठ के काम कर रहा है and he is just simply sitting around. Are you getting the mood of the story? What is the mood of the story? This is a simply light story, very light story, and जैसे कि the snake and the mirror थी, quite similar in the interest. दोनों का जो theme type है, जो दोनों का mood है, वो दोनों का quite similar है. A very simply relaxing story, and the narrator is explaining that how much he likes to pack and how much he likes to boss around. उसको पैकिंग भले ही पसंद ना हो, लेकिन उसको पसंद क्या है? उसको बॉस अराउंड करना पसंद है.
He likes to boss around and he likes to make others work. Because उसके साथ पहले ऐसा हो चुका है, उसके साथ ऐसा पहले हो चुका है that others are relaxing and he is working. So this time what does he want? He wants to boss around, he doesn't want to work, and he makes others want to work. वो चाहता है कि दूसरे काम करें and he just simply sitting down. Okay, so let's move forward. Now, I'm not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. Now, अब मैं ऐसा person नहीं हूँ. Who is saying this? The narrator is saying, I'm not like that. मैं ऐसा person नहीं हूँ. I can sit still and see another man slaving and working. मैं ऐसे नहीं देख सकता that other person is working and other person is slaving and I am sitting around. I'm not like that. I want to get up and superintend and walk around with my hands and my in my pockets. Wait, I'm not able to see here. Okay, let me just take out the book. I'm not able to read in the text. Children, is the text clearly visible to you? Just give me a thumbs up, everyone. The text is clearly visible to you. If the text is not clearly visible, you can just take out the books and you can read it in your books. Okay. Okay. Now I'm not like that. I can sit still and see another man slaving and working, and I cannot just see others are working and I'm simply sitting around. I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ, और काम ये क्या करना चाहता है? He just wants to walk around with his hands in his pocket and he can tell others what to do. He doesn't want to work. He just wants, ये बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ऐसे कि कुछ भी काम ना करूँ. He's saying कि मैं ऐसा पर्सन हूँ जो काम करूँ, और काम क्या करना चाहता है? ये पॉकेट्स में हैंड्स डाल के और लोगों को बताना चाहता है कि उनको क्या करना चाहिए. Okay, so in short, he doesn't want to work. He just simply wants to boss around. It is my energetic nature. I can't help it. ये मेरा energetic nature है to tell others what to do. He can just tell others what to do. He will not do anything. He will simply tell what others should do, and he will boss around. And I can't help it. This is my nature. However, I did not say anything but started the packing. But मैंने कुछ नहीं कहा, जॉर्ज और हैरिस को कुछ नहीं कहा, and simply I started packing, और मैंने packing start कर दी. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last. मुझे लगा था बहुत देर लगेगी. I thought it would take longer, but it was going to take longer, but finally उसने जो था finishing packing जो है उसको finish कर दिया, and I sat on it and strapped it, and simply he just strapped the whole briefcase. उसने finally उसको बंद कर दिया, packing सारी finish कर दी. Ain't you going to put the boots in? Said Harris. Now Harris ने बीच में बोला उसको, Are you going to put the boots? आप जो उनके क्या अपने जो shoes हैं, क्या तुम अंदर नहीं रखोगे shoes? And I looked around and I found I had forgotten them. Then he looked around and he saw that he had not packed the boots. उसने boots जो थे वो नहीं pack किए थे. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. अब वो हैरिस को एक्सप्लेन कर रहा है कि इसकी तो आदत ही ऐसी है कि जब तक मेरा काम खत्म ना हो जाए पूरा, उसके बाद में ही ये कुछ बोलेगा. अगर पहले ही बता देता कि तुम्हारे शूज तुम भूल गए हो, तो इट वुड हैव बीन बेटर फॉर देम. बट ही इज एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ हैरिस कि ये हमेशा ऐसा ही करता है, ये हमेशा मुझे एंड में बताता है सारा काम खत्म होने के बाद में. And George laughed, one of those irritating, senseless laugh of his. And also he's explaining now, George, how is George? That he is laughing at it, कि पूरी packing हो गई और तुम shoes तो भूल ही गए. So now George is laughing at it and he is explaining that George is like that only, कि George तो ऐसा ही है, ऐसे ही अपनी बेवकूफ हंसी हंसता रहता है. They do make me so wild. He's saying कि मेरे को बहुत irritate करते हैं. Who? George and Harris, the two friends of his. I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. So now the narrator has opened the bag and he has packed the boots. उसने जो boots थे, shoes थे, वो अंदर रखे. And suddenly a very wild idea clicked into his mind. अब उसके दिमाग में एक wild idea आया. Had I packed my toothbrush? क्या मैंने toothbrush pack किया क्या? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. अब वो बोल रहा है कि I don't know how it is. अब कि मुझे याद नहीं रहता कि मैंने टूथब्रश कभी पैक किया नहीं किया, कि मुझे हर बार की पैकिंग में
मुझे कभी याद नहीं रहता कि मैं टूथब्रश पैक कर चुका हूँ या नहीं कर चुका हूँ। हमेशा मैं ये चीज भूल जाता हूँ कि मैंने किया है पैक या नहीं किया है टूथब्रश को। My toothbrush is a thing that haunts me when I'm traveling and makes my life a misery. कि टूथब्रश एक ऐसी चीज है which haunts me, जो मुझे डराती है, when I'm traveling and makes my life a misery. इसका मतलब क्या है कि जब भी वो पैक करता है, जब भी वो पैकिंग करता है, ट्रैवल कर रहा होता है, टूथब्रश इज द थिंग which haunts him because he keeps forgetting packing his toothbrush. कि वो हर बार टूथब्रश पैक करना भूल जाता है एंड उसकी जो जर्नी है वो हॉरिबल बन जाती है क्योंकि उसने टूथब्रश कभी पैक नहीं किया होता है। सो सी हियर इट इज रिटन माय टूथब्रश इज ए थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। कि मेरा एक टूथब्रश जो है वो एक ऐसी चीज है जो मुझे ट्रैवल करते वक्त डराती है एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, और मेरी लाइफ को मिजरेबल बना देती है। Okay, I dream that I haven't packed it, and wake up in a cold perspiration and get out of the bed and hunt for it. So हर बार जब भी मैं भूल जाता हूँ, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं ड्रीम करता हूँ कि मैंने कभी, मुझे सपना आता है टूथब्रश का कि मैंने टूथब्रश पैक नहीं किया है। और जब मैं एकदम से उठता हूँ इन कोल्ड पर्सपिरेशन, एकदम जब आप पसीने पसीने से उठते हो एकदम से, वेट जस्ट फॉर अ सेकंड चिल्ड्रन। Okay, sorry for the excuse. Wait. Oh, are you awake? Everyone is awake. Is there? सब सो गए या जग रहे हैं? Is anyone awake? Anushka, Parth, your cameras are not on. Jatin, Kanika, Ayan, Aditi. अच्छा, ये आपको बेड टाइम स्टोरी नहीं सुन रहे हैं हम लोग। ओके, वी आर लर्निंग ए लेसन, वी आर नॉट सिंपली, आई एम नॉट टेलिंग यू अ बेड टाइम स्टोरी कि 3 दोस्त थे, उनका टूथब्रश खो गया। आपको बेड टाइम स्टोरी नहीं सुना है, लोरी नहीं सुन रहे हैं। ओके, जस्ट you have to pay interest in how humorously the story is written। कि कहाँ कहाँ पे ऐसे जो humorous incidents हैं, जैसे हमने स्नेक एंड द मिरर में निकाले थे, you have to see how the story is written, कि इसकी जो writing है that is special about it, otherwise it's a simple story, but कैसे लिखा गया है that you have to pay interest on, and that you have to find out कि कहाँ कहाँ पे ऐसे humorous incidents लिखे हैं। okay, let's get back। जैसे एक incident क्या है कि मेरा जो टूथब्रश है, इट हॉन्ट्स मी, कि मुझे डरावने सपने आते हैं कि मैंने टूथब्रश पैक नहीं किया है। सो किसको ऐसे डरावने सपने आते हैं टूथब्रश नहीं पैक करने के, राइट? सो इट्स अ वेरी वियर्ड वे, इट्स अ वेरी अनोइंग वे कि कैसे ये स्टूपिड तरीके से एक्सप्लेन करा है कि मेरे को टूथब्रश नहीं पैक करने के डरावने सपने आते हैं। सो दैट इज अ वेरी सिमिलर, वेरी ह्यूमरस इंसिडेंट, जैसा कि हमारे पास किसमें हुआ था, स्नेक एंड द मिरर में हुआ था। सो सिमिलरली यू हैव टू फाइंड ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारी राइटिंग्स आएंगी, एंड दैट यू हैव टू मार्क आउट। ओके, सो where were we? Yeah, my toothbrush is a thing that haunts me when I'm traveling and makes my life a misery। ठीक है, मुझे हमेशा टूथब्रश भूल जाने के सपने आते हैं और एकदम से मैं डर से उठता हूँ, एंड आई वेक अप इन कोल्ड पर्सपिरेशन, कि एकदम मैं, जैसे आप कभी कभी आपको डरावना सपना आता है, एकदम से पसीने पसीने में उठते हो कोई डरावने सपने में, राइट? इसका डरावना सपना क्या है कि ये टूथब्रश भूल गया है। ठीक है, सो वेरी वियर्ड वे, सिमिलरली वियर्ड एज द स्नेक एंड द मिरर। एंड गेट आउट ऑफ द बेड एंड आई हंट फॉर इट, और मैं रात को ही उठ के और वो अपना टूथब्रश ढूंढता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन to get it, and it is always the last thing. Wait, I'm not able to read. And yeah, so the narrator, and I haven't packed it. I dream that I haven't packed it, and I wake up in a cold perspiration and get out of the bed and hunt for it. And in the morning I pack it before I have used it। और हमेशा क्या करता हूँ मैं, जैसे मैंने मॉर्निंग में जैसे ही अपना ब्रश यूज करता हूँ, उसको तभी के तभी वापस उसको पैक कर देता हूँ, कि ताकि मैं उसको अगली बार के लिए ना भूलूं, क्योंकि उसको टूथब्रश भूल जाने का बहुत डर रहता है, कि हमेशा मैंने टूथब्रश जो है
हमेशा भूलता हूँ, हमेशा उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है. And it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack it and forget it, and I have to rush upstairs for it at the last moment and carry it. Okay, कि मैं decide करता हूँ हर बार कि इसको मैं ब्रश करते ही वापस अपने अटैची में पैक कर दूंगा, लेकिन मेरे साथ क्या होता है, हर बार मैं उसी को भूलता हूँ, और जब मैं वापस किसी जगह से निकल रहा होता हूँ तो मैं वापस दौड़ के जाता हूँ और अपना टूथब्रश लेके आता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा उसको भूल चुका होता हूँ. उसके लिए इम्पोर्टेंट भी टूथब्रश उतना ही है कि उसको पैक करना नहीं भूलना है, और हर बार वो उसी को ही भूल रहा है. And I have to rush upstairs for it the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. और मुझे लगता है मैं भूल चुका हूँ, पर कितनी बार, and at the last moment I carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. और कितनी बार उसको मैं वापस वहां से लेके आता हूँ. पैक करना तो मैं उसको भूल ही जाता हूँ हर बार, तब उसको मैं ऊपर से लाके और अपने ही पॉकेट में लेके फिर लेके जाता हूँ उसको, क्योंकि मैं उसको पैक करना तो हमेशा भूल गया हूँ. Of course, I had turned every mortal thing out now. Of course, I had to turn every mortal thing out now. And of course, I could not find it. ठीक है, अब हर बार उसको सारी वो चीजें ढूंढनी है कि कौन कौन सी चीज मुझे पैक करनी है. So he is making a list kind of what are the things which he has to pack. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world has created and when chaos reigned. See, यहाँ पे भी similarly humorous incident. Okay, Jen, are you getting how the story is going on? Are you getting it? किसी को समझ में आ रही है ये स्टोरी की कैसे ये स्टोरी जा रही है या क्या स्टोरी नहीं जा रही है? Is anyone getting it? And can anyone explain me how the story is going? और यहाँ छोटी छोटी बात चीजों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, टूथब्रश भूल जाना और पैकिंग करना, एंड व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट? कैन एनीवन एक्सप्लेन टू मी व्हाट द स्टोरी इज अबाउट? किसी को समझ में आ रहा है ये स्टोरी क्या है या क्या नहीं है, या नहीं समझ में आ रहा है, वो भी आप बता सकते हैं. Does anyone know? Is anyone there in the class? Your cameras are not on, children. Okay, I might have to call. Anushka, can you please explain what the story is about? The story was about the packing constraints between the three friends, which was packing around. And ठीक है, 2-3 दोस्त हैं वो पैकिंग कर रहे हैं, बट यहाँ वियर्ड या स्पेशल क्या है, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं उस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया है. दे आर लेइंग एम्फेसिस ऑन द वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, वेरी माइन्यूट डिटेल्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि टूथब्रश भूल जाना, जैसे कि टूथब्रश भूल जाना, टूथब्रश के बारे में सपने आना. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट पैकिंग, बट पैकिंग के अंदर भी जो वियर्ड अजीब अजीब से इंसिडेंट्स हैं वो इसके अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं. ओके, वी विल फाइंड आउट मोर और कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं. ओके, anyone else has any other comment about the chapter? The chapter, how is it going, how is it not going? Anyone else knows about the chapter? No, right? Okay, we will continue with the chapter in the next class. Wait. Okay, so these three students, these three friends, they are packing for some journey. They are packing for some journey. किसी journey के लिए pack कर रहे हैं. ठीक है. जॉर्ज हैरिस दो फ्रेंड्स हैं नरेटर के. ठीक है, दे आर द टू फ्रेंड्स ऑफ द नरेटर, एंड ही इज प्लानिंग कि वो क्या करेगा. उसने दिमाग में सोच रखा था कि जॉर्ज और हैरिस से सारी पैकिंग करवाऊंगा बैठ के, और मैं उनको बताऊंगा कि तू ऐसे कर, तू ऐसे कर. लेकिन बात पड़ गई उल्टी. उसने बोला कि मैं बताऊंगा तुम्हें पैकिंग कैसे करनी है, तो उनको लगा कि पैकिंग तो यही करेगा, हम आराम से बैठ जाते हैं. जॉर्ज एंड हैरिस, दे आर सिंपली सिटिंग डाउन, एंड फाइनली हु इज पैकिंग? द नरेटर इज पैकिंग. एंड नाउ नरेटर इज एक्सप्लेनिंग कि वो पैकिंग कैसे करता है, हर बार क्या भूलता है, हर बार उसको क्या प्रॉब्लम आती है पैकिंग करते वक्त, और जॉर्ज और हैरिस उसकी पैकिंग पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, दैट ही इज एक्सप्लेनिंग. ओके, सो दैट वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर. जब हम जैसे जैसे थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, तो आपको कम वियर्ड लगेगा, अभी आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है. ठीक है. ओके चिल्ड्रन, प्लीज टर्न योर कैमराज ऑन.